Hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss the GK topic for the upcoming XAT and CMAT exam. So in this class, actually, I would be discussing important polity questions. Polity means, let me explain. Polity means the things associated with constitution, governance, गवर्नेंस है ना, इससे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, आया भी है पहले भी. So this we are going to discuss, and we will discuss some questions regarding science and technology as well. So I think I'm audible, visible, everything is fine. If everything is clear, please write yes in the comment so that I can understand that everything is fine. Is my voice clear? सब कुछ clear है? Okay, so let us begin with the first question of the day. The first question is yes, fine, thank you. Preeti Kumar, Rami 79. Okay, good evening. The first question is Droupadi Murmu is the dash woman president of India. So आपको बताना है कि, and I think these are very simple questions and I hope that you all should be answering it easily. Droupadi Murmu जो है वो कौन सी president, मतलब first, second, third, fourth? What is the right answer to this question? Yes, Rami 79 and Yash is saying second. Yes, who is the first one, by the way? First woman president of India was, what is her name? First was actually Pratibha Patil, Miss Pratibha Patil. Na. So this is what you should be knowing. Yes, Preeti Kumar, you're right, Pratibha Patil. And Yash has also answered me correctly. Very good. Let us move on to the next question. The next question is Droupadi Murmu is the dash tribal president of India. So, kaun si first, second, third, fourth? What should be the right answer? And please tell me, okay, first answer this, then I will ask. Yes, Rami 79 and Vedant, you both are right. Yes, you are also right. First tribal president of India. तो ये बनी थी 2 साल पहले. It was very much in the news, है ना? And she is the first president from tribal community and second woman president after Pratibha Patil. And she is the youngest to occupy the post and first to be born after independence India. In 1915 अगस्त 1947 के बाद पैदा होने वाली फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी. उससे पहले जितने भी प्रेसिडेंट थे सब आजादी से पहले पैदा हुए थे. Okay, so these are some basic facts you should be knowing about. Yes, Preeti Kumar, Satvik, you all are right. Now, let me ask another question. That Droupadi Murmu has served as the governor of which of the following states in the past before being the president of India? अच्छा, कोई ये बता सकता है कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है. So she belongs to which tribe? ये कोई बता सकता है? हाँ, yes, Rami 79, Vedang, you both are right. Jharkhand की गवर्नर थी. This is so she is the right answer. Before being appointed as the president of India, she had earlier served as Jharkhand governor. And she belongs to which tribe? कौन से ट्राइब से? संथाल. Very good, Vedang. So the right answer actually is, है ना? ठीक है, 9th गवर्नर रह चुकी थी 2015 से 2021 और 2022 में she became the president of India. Yes, Mehul and Vedang, you both are right. She belongs to the tribe called as Santhal tribe. ठीक है, संथाल ट्राइब आज अगर आपको मिलेगा तो झारखंड ओडिशा रीजन में. So she is actually from the state of Odisha. ठीक है. Yes, Satvik, very good. Now, since we are talking about Santhal tribe, you must be knowing it in history of India. तो India की history में, because they are asking questions from history also, I'm sure you must have heard about Santhal revolt against British. This happened. This was a revolt by Santhal tribe against the British. So can you please tell me in which year this happened and who was the leader against the British? Acha, okay, first tell me.
नॉट बिरसा मुंडा. यस, वो मुंडा ट्राइब के जो लीडर थे उनका नाम था बिरसा मुंडा. आई एम आस्किंग अबाउट संथाल ट्राइब के लीडर थे, संथाल रिवॉल्ट. So संथाल रिवॉल्ट actually happened in the year 1855, just before 1857 revolt, and the leader was सिद्धू मांझी. Actually, चार लोग थे, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव. So these are the four names. Okay, so this you should be knowing about. तो राइट है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज संथाल, बिकॉज दीज आर इन द न्यूज, है ना, संथाली फैमिली फ्रॉम ओडिशा. लेट अस मूव ऑन. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज आस्क्ड इन मेनी एग्जाम. और मैंने पहले भी पढ़ाया था और कई सारे एमबीए एग्जाम्स में कई जगह पूछा जाता है ये करंटली हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया. करंटली आज के दिन कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरी, बिकॉज इन द लास्ट आई वुड से 5 years वी हैड सीन सम चेंजेस and that is why people sometimes get confused. That is why I'm asking it. Some people are saying A, कुछ लोग C बता रहे हैं. Yes, so Vedang, Satvik, Archie, yes, you all are right. And yes, the right answer is C. Please remember it. This is very 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 important question. ये मैंने कई सारे एग्जाम्स में देखा है पूछते हुए. There are 28 states and 8 union territory in India. Okay, कुछ लोग बोलेंगे सर कैसे, बिकॉज अगर आपको याद होगा 5 अगस्त 2019, बिफोर दिस we had 29 states and 7 union territories. ठीक है, ऐसा था कुछ, यानी ये वाला केस था ना. लेकिन what happened was कि जम्मू एंड कश्मीर on 5th August 2019 the decision was taken that okay, from 31st October 2019 the Jammu Kashmir state was broken and it will be made 2 union territory. तो 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, 7+2 है ना. तो जम्मू कश्मीर स्टेट was broken into 2 union territory and that is Jammu Kashmir union territory and Ladakh union territory, है ना, ऐसा कुछ हुआ. तो 2 यूनियन टेरिटरी बन गया, तो 7+2 9 यूनियन टेरिटरी, और इसमें से एक -1 हो गया, तो 28 स्टेट्स हो गया और 9 यूनियन टेरिटरी. अब इस 9 में क्या हुआ कि 2 यूनियन टेरिटरी को मर्ज भी कर दिया गया लेटर ऑन इन दिसंबर 2019. और वो 2 यूनियन टेरिटरी है दादरा नगर हवेली, आपने नाम सुना होगा, और एक और है दमन एंड दीव. इन दोनों को मर्ज कर दिया गया. So now it is called as दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव. तो जब मर्ज किया जाएगा 2 यूनियन टेरिटरी को, so it will become 1. तो 9 - 1 8 हो गया. So the right answer is C, 28 states and 8 union territory. Please remember it. This is very 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 important. तो मैं इसको स्टार मार्क लगा दे रहा हूँ, 5-6 स्टार. So yes Ankush, you are also right. C is the right answer. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए. Just have an idea. Let us move on to the next one. Who among the following is the ex officio chairman of Rajya Sabha? Ex officio मतलब क्या होता है? By virtue of. इसका क्या मतलब होगा? Means whoever is means actually whosoever is actually the holding this post will automatically be the chairman of Rajya Sabha. Yes Ankush, Vedang, Rahul, you are right. Vice President of India actually automatically becomes the chairman of Rajya Sabha. ठीक है, ये तो पता होगा. And who is the Vice President of India currently? ये न्यूज में, because recently there have been some removal motion against the Vice President of India. That is why I'm asking. President of India कौन है अभी? Vice President of India कौन है? Yes, Mr. जगदीप धनखड़. हाँ, अच्छा, स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है अभी? Yes, Rahul, Ankush, yes, you are the right. Speaker of Lok Sabha. Yes, the right answer is Mr. Om Birla. Yes, Archie, you are right. Ankush, you are also right. Rahul, you are right. ठीक है. खैर, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए. You should be knowing about it. Yes, great. Now,
The next one is ये XAT का actually PYQ है. If I'm not wrong 2017 या 18 में पूछा था. Who among the following is appointed and not elected? Governor, Vice President, Speaker of Lok Sabha, President of India. अपॉइंट किसको किया जाता है इसमें? दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है. Who among the following is appointed and not elected? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन नहीं होता है क्या? थोड़ा सा सोचो. जस्ट थिंक. डू वी हैव इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यस और नो? इलेक्शन होता है ना. इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएस वोट. ठीक है, कॉमन मैन नहीं वोट करते हैं. वी कॉल इट एज इनडायरेक्ट इलेक्शंस, बट इलेक्शन होता है इनका. स्पीकर ऑफ लोकसभा का भी लोकसभा के अंदर इलेक्शन होता है. वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है. ऑल द इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है. कॉमन पीपल डू नॉट गो एंड वोट, बट यस इलेक्शन होता है. गवर्नर इज डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. तो वर्ड यूज वुड बी अपॉइंटमेंट. ठीक है. अपॉइंटेड वर्ड जो तो गवर्नर के लिए होता है. गवर्नर का कोई इलेक्शन नहीं होता है. द प्रेसिडेंट कैन डायरेक्टली अपॉइंट, ऑफ कोर्स ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, नॉट बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, बट दैट इज व्हाट ये पीवाईक्यू है XAT का. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि the word used would be appointed because there is no direct election, there is no concept of election in governor. गवर्नर का कोई इलेक्शन नहीं होता है ना. ठीक है, so this you should be knowing. Okay, let us move on to the next question. Mr. Jagdeep Dhankar, who is currently the Vice President of India, had earlier served as governor of which state? अभी इसलिए भी न्यूज में because recently there have been some removal motion against Mr. Jagdeep Dhankar and also I hope you are aware. Yes, Vedang, you are right. Great. The right answer is C. Actually, he had earlier served as the West Bengal governor, and after that he was elected as. देखो यहाँ मैंने elected word इसीलिए लिखा है because there is an election process. ठीक है. We are not going in that detail कि कैसे election process होता है because वो आपके लिए थोड़ा सा higher side में होगा. But you should know it that common people do not vote. It's a vote. It's an indirect election. But yes, there is an election. So the right answer is C is the right answer. Yes, Satvik, you are right. Ankush, Vedang, you all are right. है ना? Okay. The next one is which of the following articles of the Indian Constitution talks about president rule in state? President rule कह लो या state emergency कह लो, है ना? So if it is required to impose president rule, which article talks about state emergency? ये सब पता होना चाहिए, चारों पता होना चाहिए. All 4 articles are very important. Yes, Ankush and Satvik is right. Article 356 talks about it. This is state emergency. प्रशांत, पॉइंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, आप पॉइंट के फैकल्टी से पूछ लीजिएगा प्लीज, है ना. If you have any question regarding GK and current affairs, please ask me. हाँ, so Article 352 is related with national emergency. जो आपने सुना होगा when during Indira Gandhi time it was imposed and all. ठीक है. And Article 360, which has never been imposed till now, is financial emergency. ठीक है. So ये आपको पता होना चाहिए. Okay, so these are the basic things you should be knowing. है ना. तो ये क्वेश्चन आया था XAT में. What is Article 356 of the Indian Constitution? तो इसमें क्या होगा? Imposition of president rule after suspension of a state government. So D is the right answer. E is the right answer. ठीक है. तो इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है ना. There's a provision of special status earlier Article 370 के अंदर दिया जाता था, which is no more, है ना. So that is what you should be knowing. Now, which article of the Indian Constitution talks about constitutional amendment?
means under this article the parliament has power. Parliament has power to amend the constitution. To amend matlab change the constitution. Yes, Rahul, Rami 79, you both are right. Article 368 is the right answer to this question. Okay. Okay, so you should know. And a power of parliament to amend the constitution and procedure thereof. Okay, so the right answer is D. Yes, Rahul and Rami, you both are right. D is the right answer. इसको पढ़िएगा, notwithstanding anything, this parliament may exercise its constitutional assembly power by amending, है ना? तो चाहो तो पढ़ सकते हो. ये और ये important actually because अभी recently one nation one election से related constitutional amendment की बात हो रही थी and all. ठीक है? So that is what you should know. D is the right answer. Now let us move on to the next one. How many schedules are there in the Indian Constitution? अभी करेंटली कितना है और ये भी बताना है कि ओरिजिनली हाउ मेनी वर प्रेजेंट. ओरिजिनली मींस in on 26 January 1950 how many schedules were there? Yes, Ankush Kumar, you're right. Rahul also, you're right. ठीक है. So originally 8 था, now we are having 12 schedules total. So B is the right answer to this question. ठीक है. Originally 8 थे, हाँ. Okay, so originally we had 8 schedules and now we are having total 12 schedules. Okay, so B is the right answer. Yes, Satvik, you are right. B is the right answer. Okay, कुछ schedules जान लेते हैं जो famous popular ones है. जैसे 8th schedule बहुत famous माना जाता है. So 8th schedule contains how many actually it mentions Indian languages, है ना? जिसको schedule languages कहते हैं ना. So how many languages are there? And originally कितने languages थे इसमें? Yes, Vedang and Ankush, you both are right. We are currently having 22 languages in 8th schedule. And originally कितना था? Yes, Rahul, you are also right. 14 to 22. Yes, Ankush, very good. So originally we had 14. Originally मतलब 26 January 1915 को. And 8 were got added and now we are having 22. So D is the right answer to this question. 22 languages are there. तो आप देख लेना ये 22 लैंग्वेजेस में जैसे आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी. सो दीस आर 22 लैंग्वेजेस. इसमें समझना क्या है? इसमें समझना ये है कि ऐसे को पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लैंग्वेज मेंशन इन 8th शेड्यूल. तो कैसे करोगे आप? तो पहला कॉन्सेप्ट ये कि सारी इंडियन लैंग्वेज है. अगर मान लो एक ऑप्शन में इंग्लिश लिखा रहेगा तो उसको मार्क कर देना, इंग्लिश इसमें नहीं होगा. व्हाई? Because it is not an Indian language. Urdu is present, but Arabic नहीं होगा, Persian नहीं होगा, because these are foreign language, not in India, Indian born. Similarly, जैसे हिंदी है तो इंडिया की लैंग्वेज है ना? And rest you can see even Nepali is also spoken in India and all. Malayalam is there, Sanskrit is there. ठीक है. एक दो तीन चार बार रीड कर लेना. Dogri you will find it in Kashmir region, being spoken Maithili in Bihar. Santhali we have just discussed, Santhal tribe, है ना? So Santhali you will find it in Jharkhand and Odisha region and all. तो ये थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा इसको, because sometimes they do ask questions. जैसे पूछते हैं कई बार, I have seen in some exam they are asking कि कौन से अमेंडमेंट में कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई. जैसे सिंधी was added in 1967, फिर 3 मोर लैंग्वेज ऐड हुई, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली 1992 में, फिर बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली 2004 में ऐड हुई. So this is how what you should be knowing about. Okay, let us talk about the next one. Okay, I'm very sorry. This should have been another option. Which of the following list talks about 3 lists: union, state, and concurrent list? ये कौन से schedule में mentioned है? And I think now you should be answering because answer was not given in this option. So the right answer is 7th schedule में. So when you read 7th schedule of the Indian Constitution, they clearly talks about the 3 lists. There's a union list में, whatever are the items mentioned in union list, the parliament can make laws. State list, the state legislature can make laws. And concurrent list, both can make laws. Okay. Yes, Ankush, Rami. Right. Rami, you are also right. I forgot to mention the correct statement. So it's actually option E, 7th schedule. Okay. So ये आपको पता होना चाहिए. This you should be knowing. है ना?
सो ये 7th लिस्ट है ना, यूनियन लिस्ट है, एंड डिफेंस, नेवल, मिलिट्री है ना, ये सब ऑफ कोर्स जैसे डिफेंस है तो कॉमन सेंस है, स्टेट के पास थोड़ी रहेगा पावर, ये तो सेंटर ही के पास रहेगा, एंड आर्म्स, एटॉमिक एनर्जी, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल। सिमिलरली स्टेट को, जैसे स्टेट में हाँ फेडरल, हाँ, और स्टेट में पावर होगा जैसे पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब, फिर कॉन्करेंट लिस्ट में मैरिज, डिवोर्स, ये सब से रिलेटेड चीज रहेगा रूल। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? एंड वाई? कोई वाई भी बता दोगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी। Yes, Rahul, Rami, Satvik, you are right. हाँ, अंकुश, for the second amendment 1976. Why? ये उसी टाइम था जब इंदिरा गांधी had imposed emergency. So emergency was from 1975 to 77, है ना, 25th June 1975 to 23rd March 1977. उसके बीच में 42nd amendment हुआ था, and it is called as mini constitution because it brought a lot of changes. ठीक है, यस सात्विक, वेरी गुड, यस राहुल, अंकुश, राइट, बहुत सारे चेंजेस किया गया, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इट ब्रॉट अ लॉट ऑफ चेंजेस। सो जैसे प्रीएम्बल में चेंज लाया है ना, सो इट ब्रॉट चेंजेस, प्रीएम्बल इंसर्टेड द एंटायर फंडामेंटल ड्यूटी, पर बहुत सारे जुडिशियल पावर्स को चेंज किया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस किया गया, ट्रिब्यूनल का कॉन्सेप्ट लाया गया, ठीक है, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स गॉट चेंज्ड इन 42nd अमेंडमेंट, एंड दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। एक बार में इतनी सारी चीजें शायद ही कभी चेंज की गई थी पहले, so this is you should be knowing about. Now let us move on to the next one. Which of the following words were added in the preamble by 42nd amendment 1976? What is the right answer? तीन नए वर्ड ऐड किए गए थे actually which was not earlier present but these were added later on in 42nd amendment 1976. Yes, Rami, 79, you are right. The right answer is socialist, secular and integrity. So these three words were added later on which was not originally present. तो मैं दिखा देता हूं, if you can see the preamble, socialist, secular और नीचे में integrity. So the three words which I have highlighted by red pen are the words which were not originally present, which were added later on. Yes, Rahul, you are also right. B is the right answer. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए. Let us move on to the next one. Which of the following dates are mentioned in preamble? 15th August 1947, 26th November 1949, 26th January 1950, none of the above. कौन सा डेट मेंशन्ड है? That is also called as Constitution Day. We are celebrating these days. Yes, Rahul and Ankush, you both are right. The right answer is 26 November 1949. And that is why we celebrate 26 November as Constitution Day. पहले इसको लॉ डे करके सेलिब्रेट करते थे, and not is celebrated as Constitution Day. 26 नवंबर, ठीक है, तो अगर आप प्रियम्बल में देखोगे यहाँ नीचे मेंशन्ड है ना, 26th day of November 1949, ठीक है, so B is the right answer. Yes, Satvik, very good. हाँ, okay, let us move on to the next one. इस तरह का क्वेश्चन मैंने देखा, आई थिंक XAT CMAT इसमें पूछते हैं कि इसमें से कौन सा टाइप का इक्वालिटी नहीं मेंशन है प्रीएम्बल में, कौन सा मेंशन है, किस टाइप का जस्टिस मेंशन है, किस टाइप का नहीं मेंशन है. आई हैव सीन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है. Which of the following word is not mentioned in the preamble? Yes, very good.
हाँ, इसमें कई सारे लोगों ने आंसर कर दिया, फेडरल वर्ड नहीं मेंशन है, ग्रेट। इसमें जैसे ना सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, फिर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। जस्टिस में सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, फिर फ्रैटर्निटी, ये सब मेंशन्ड है। सो की वर्ड्स आपको याद होना चाहिए, बिकॉज मैंने देखा है क्वेश्चन एमबीए के एग्जाम में, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलिड रिजॉर्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया टू सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। फिर ये वर्ड जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ओके। और 26th day of November 1949 we do hereby adopt, enact and give to ourselves the constitution, ठीक है। तो ये सब पूछते हैं कभी कभी। Now the next one is how many fundamental rights are there in India? कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? ये तो बताओगा। These are basic things. Yes, Rami 79, you're right. 6 fundamental rights are there, मतलब करंट पूछा जा रहा आज के दिन। Yes, Shivangi, you're also right. Satvik, you're right. B is the right answer. ठीक है। So these are the 6 fundamental rights: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural education rights, and right to constitutional remedies, ठीक है। अब एक सवाल ये है, इस टोटल ओरिजिनली 7 हुआ करता, कुछ लोगों ने 7 आंसर किया है, तो ये मैं बता रहा हूं, ओरिजिनली देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स, बट लेटर ऑन राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड बाय विच अमेंडमेंट? तो पहले 7 हुआ करता था, नाउ वी आर हैविंग 6 फंडामेंटल राइट्स। सो अर्लियर वी यूज्ड टू हैव 7, so the 7th one was removed. Now it is a constitutional right under article 300 capital A, right to property. Earlier it was mentioned in article 19(1)(f) and article 31 में भी था, 31B या 31 में something, ठीक है। So now it is a constitutional right. So which amendment changed this? कि fundamental right से हटा दिया गया? This is also very very important, I would say. And yes, अंकुश कुमार, वेरी गुड। 44th अमेंडमेंट 1978, जब जनता पार्टी गवर्नमेंट आई थी, आफ्टर इंदिरा गांधी लॉस्ट द इलेक्शन, जनता पार्टी गवर्नमेंट केम टू पावर एंड इट डिड अ लॉट ऑफ चेंजेस। Many of the things actually of 42nd amendment were undo, means were actually changed or reversed, लेकिन बहुत सारी नई चीजें भी लाई गई थी। So 44th amendment also did this removal of right to property from fundamental right. So B is the right answer. Ankush, Shivangi, Harsh, you all are right. B is the right answer, है ना। तो ये है 6 फंडामेंटल राइट। राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 है, राइट टू फ्रीडम 19 से 22 है, आर्टिकल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23, 24, देन यू कैन से 25, 28, 29, 30, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज 32। Now let us move on to the next question. The next question is who among the following was the chairman of drafting committee in Constituent Assembly? What is the right answer to this question? बताइए। So the right answer is Dr. Bhimrao Ambedkar. This is very very famous. You should be knowing, है ना। भीमराव अम्बेडकर, ये याद होना चाहिए, स्टार मार्क कर लीजिए। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी भीमराव अम्बेडकर। यस, राहुल इज राइट। Let us move on to another article, another question which says which article of the Indian Constitution Bhimrao Ambedkar said that it is heart and soul of the Indian Constitution? इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल, दिल और आत्मा बताया। And this is asked in many exams, that is why I'm discussing. Yes, Rahul, Satvik, Ankush. हाँ, the right answer is article 32, है ना। तो क्यों? Because if fundamental right is violated, you can directly go to the Supreme Court under article 32, जिसको right to constitutional remedy कहा गया। यहाँ लिखा था ना, ये last one. Right to constitutional remedy means if your fundamental right is violated, you can move the Supreme Court under article 32. Yes, B is the right answer. Yes, Ankush, Satvik, you are right. B is the right answer. Now the next is who is the first law officer of the country? लगता है science and technology नहीं हो पाएगा because polity के इतने questions हैं and I find it important. हाँ, 226 under High Court. Very good, Ankush. हाँ. First law officer of the country.
Attorney General of India, Chief Justice, Solicitor General, Law Minister. What is the right answer to this question? And अभी कौन है वो? Name the person who is having this post. Some people are saying A, कुछ लोग B भी बता रहे. What should be the right answer? First law officer means senior most lawyer of the central government. ठीक है. So that is actually the Attorney General of India. इनको जो है ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहेंगे फर्स्ट जुडिशियल ऑफिसर या सीनियर मोस्ट जुडिशियल ऑफिसर. अगर फर्स्ट जुडिशियल ऑफिसर लिखा है, जुडिशियल ऑफिसर मतलब जज को कहते हैं, लॉ ऑफिसर मतलब लॉयर को कहते हैं. ठीक है. तो टेक्निकली अगर फर्स्ट जुडिशियल ऑफिसर कहा जाए देन इट कैन बी या सीनियर मोस्ट जुडिशियल ऑफिसर. ठीक है. And someone is asking, sir, difference between A and C option. So Solicitor General is the second law officer of India. Second law officer of India मतलब second senior most lawyer of the central government. केंद्र सरकार के लॉयर्स होते हैं, इतना तो पता होगा आपको कि ऑफ कोर्स जब गवर्नमेंट रन करी तो बहुत सारी लॉयर्स चाहिए, है ना. तो उस लॉयर में जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उनको अटॉर्नी जनरल कहते हैं. और जो सेकंड सीनियर मोस्ट होता है, इट इज समथिंग लाइक दिस. अटॉर्नी जनरल, उनके नीचे सॉलिसिटर जनरल, और उनके नीचे बहुत सारे एएसजीज होते हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कहते हैं, लाइक दिस. ठीक है. तो अभी अटॉर्नी जनरल कौन है? एएसजीज का नाम तो नहीं याद होना चाहिए, बट अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल का नाम याद होना चाहिए. हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करेंटली? बताइए. आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स. तो नहीं, अटॉर्नी जनरल इज मिस्टर आर वेंकटरमणी. सॉलिसिटर जनरल जो है ना, उनका नाम है मिस्टर तुषार मेहता, नॉट तरुण मेहता, तुषार मेहता. एंड अटॉर्नी जनरल इज मिस्टर आर वेंकटरमणी. तो आर वेंकटरमणी इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है. इन लोगों का नाम कई बार न्यूज में आता है, खासकर इनका नाम काफी आता है. इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर यू मस्ट हैव हर्ड हिज नेम, मिस्टर तुषार मेहता. ठीक है. तो ये सब पता होना चाहिए. अच्छा, बाय द वे, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? द लॉ मिनिस्टर, मिस्टर अर्जुन राम मेघवाल, है ना. अर्जुन राम मेघवाल, तो आपसे लिख देता हूं, मिस्टर अर्जुन राम मेघवाल, एंड ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम बीकानेर. Not Mr. Kiren Rijiju is no more the law minister. He was earlier the law minister, but now it is Mr. Arjun Ram Meghwal. He is a member of parliament from Bikaner in Rajasthan. Okay. ये भी आई थिंक मेरे ख्याल से XAT में या किसी MBA के एग्जाम में क्वेश्चन आया था. हाउ मेनी सेशंस आर देयर इन द पार्लियामेंट इन 1 year जनरली? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि देयर शुड नॉट बी अ गैप ऑफ 6 months बिटवीन द टू. जनरली कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीना से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए. लेकिन प्रैक्टिस में मतलब टेक्निकली तो आप बताओ 2, लेकिन प्रैक्टिस में 3 सेशंस होते हैं. उन तीनों का नाम कोई बता सकता है? जैसे फरवरी के आसपास होगा आपको बजट सेशन, जब बजट पेश किया जाएगा. इस साल जुलाई में इसलिए पेश किया गया था बिकॉज देयर वाज इलेक्शन, बट जनरली दिस इज द नॉर्म. फिर समवेयर ऑन जून जुलाई के आसपास जो होता है उसको हम लोग कहते हैं या कहते हैं विंटर, नहीं, मॉनसून सेशन. ठीक है. और अभी जो नवंबर दिसंबर में होगा, जो अभी शायद चल भी रहा है ना, नवंबर दिसंबर में, इसको हम लोग कहते हैं विंटर सेशन. यस अंकुश, वेरी गुड. हाँ, विंटर सेशन. यस सात्विक, ग्रेट. हाँ, तो कभी कभी ऐसे ही मैंने देखा है 4 ऑप्शन दे देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट. तो बजट, मॉनसून, विंटर, एक और कुछ और डाल देंगे. तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए. दीज आर द बेसिक थिंग्स यू शुड बी नोइंग. नाउ अभी क्या हुआ था कि रिसेंटली कुछ स्टेट्स में इलेक्शंस हुए थे. जैसे अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, तो नए चीफ मिनिस्टर से पूछते हैं कभी कभी कि नए चीफ मिनिस्टर जो बने उनका नाम बताइए, इज फ्रॉम विच पॉलिटिकल पार्टी एंड ऑल. सो इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर द इलेक्शंस.
and which political party he belongs to? Yes, Mr. Devendra Fadnavis is the chief minister. और इलेक्शन से पहले कौन थे चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के? And he is from the BJP. इलेक्शन से पहले कौन थे सीएम? Yes, हाँ बीजेपी से राइट. एंड हु वाज द सीएम बिफोर? हाँ, एकनाथ शिंदे थे फ्रॉम शिवसेना. तो जो ब्रोकन फैक्शन ना था उसमें से. तो दैट इज व्हाट यू शुड नो. अच्छा, इसके अलावा भी और जगह इलेक्शन हुआ है, जैसे हरियाणा में इलेक्शन हुआ है. सो हु इज द न्यू सीएम? हरियाणा के सीएम बताइए, प्लीज टेल मी. रिसेंटली इलेक्शंस हैपेंड. देन जम्मू एंड कश्मीर में जब से आर्टिकल 370 हटा उसके बाद इलेक्शन हुआ, एंड नाउ वी आर हैविंग द न्यू सीएम. इनका नाम बताना है, फ्रॉम विच पार्टी इज. और झारखंड में भी इलेक्शन हुआ था, बिकॉज पूछते हैं अभी ये सब. तो झारखंड में इलेक्शन हुआ था, जो नए सीएम बने उनका नाम बताइए. These are asked. मैं अपने मन से नहीं दे रहा हूं, बिकॉज तेरे क्वेश्चन. यस, मिस्टर नायब सिंह सैनी. यस सात्विक, मिस्टर नायब सिंह सैनी फ्रॉम बीजेपी. ठीक है, और इलेक्शन से पहले भी ये थे. झारखंड में इज एक्चुअली मिस्टर हेमंत सोरेन फ्रॉम झारखंड मुक्ति मोर्चा, सो JMM पार्टी. यस अंकुश, वेरी गुड. यस सात्विक, रमेश, शिवांगी, अंकुश, ऑल राइट. यस सात्विक. जम्मू कश्मीर में हाँ, द चीफ मिनिस्टर इज मिस्टर उमर अब्दुल्ला, एंड ही इज फ्रॉम नेशनल कॉन्फ्रेंस, है ना, NC, नेशनल कॉन्फ्रेंस करके पार्टी है. ठीक है, तो ये सब नए जो सीएम है. इसमें से देखो, अगर आप गौर से देखोगे तो हरियाणा के और झारखंड के सीएम वही थे, हेमंत सोरेन ही पहले थे, और हरियाणा में नायब सिंह सैनी थे. और जम्मू कश्मीर में तो खैर 2019 के बाद से इलेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि आर्टिकल 370 रिमूव हुआ था एंड ऑल, आपको पता होगा. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू शुड नो. यस, हियर इज महाराष्ट्र सीएम, झारखंड सीएम, हरियाणा सीएम एंड जम्मू एंड कश्मीर सीएम. ठीक है, देखो आइडियली इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास कराई थी, बट एक्चुअली आई फाइंड कि पॉलिटी का बहुत सारे क्वेश्चन हमको डिस्कस कराना रह गया. दैट इज व्हाई आई डिस्कस दिस ओनली, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट to have sessions also, further more sessions to cover more topics and all. ठीक है, so this is all about today's class, and most likely I'll be meeting you. इस सैटरडे को तो नहीं मुलाकात होगी, नेक्स्ट सैटरडे को 8:30 में होगी. जनरली मैं सैटरडे 8:30 क्लास लेता हूँ, बिकॉज बट आई विल बी I have some leaves and all, so that is why I have preponed it on Wednesday. So ठीक है, so this is all about today's class. Thank you everyone, thanks for watching, have a nice day.